Why is this one in the back always talking? He's asking Maharaj, is this okay? Please ask him. What's that? Is this color okay? When That color? you spoke about color, It's okay, it's tolerable. tolerable. Это Yeah, it's приемлемо. tolerable. Да. But this dark orange is definitely not correct. Но вот этот темно-оранжевый, ярко-оранжевый, однозначно это не वो रंग उसको कहा जा шафран. सकता है, लेकिन ये जो गाढ़ा नारंगी रंग है, क्या उसके बारे में पर कुछ ब्रह्मचारी स्वामी गुरु महाराज ने कुछ कहा? Мальчик Мридани, закрепись, пожалуйста, Брахмачари. Seeing that after Guru Maharaj disappeared, devotees have started to wear this color. What's that? After he disappeared. Well, that tells you something. That this color appeared after he disappeared. This is false, Maharaj. What's that? His information is false actually. He used to wear the same color. What's he saying? Not correct. His information is false. We already wore this color. What's that? His information is false. Even when Guru Maharaj was on the planet, devotees wore this color. He wore this color Devotees wore this color. when he was still here, हाँ. and he didn't say anything. Guru Maharaj also wear like this color. What did he say? He's saying Guru Maharaj also wore this color. Wear this color? Они носят такой цвет, потому что их духовный учитель носил такой цвет, когда был на планете. But unless you have some objection, it's better to wear saffron. Но у меня есть You can возражение. find this in several places in Prabhupada's teachings where he talks about wearing saffron. Лучше носить шафран. И я в нескольких That I местах know. у Прабхупады встречал प्रभुपाद की आप शिक्षाओं को его наставление, что वो हमेशा нужно भगवान की носить. बात करते हैं, उन्होंने कभी नारंगी रंग के बारे में बात नहीं किया. Srila Prabhupada himself wore different colors. I mean, sometimes he wore something like this, probably because somebody gave it to him. He didn't have anything else to wear. तो श्रील प्रभुपाद कई सारे ऐसे रंग У पहना करते Прабхупада, थे. да, бывало, что он носил разные цвета. क्योंकि उसको उनको किसी ने ऐसे रंग के कपड़े दे दिए रहते थे. But at least one instance I know of, when he saw a devotee wearing this color, he said, Mayavad. Но я точно помню, что когда Шрила Прабхупада увидел преданных вот в таком цвете ярко-оранжевом, он сказал на моей ваде. And we're going to sing Shri Shri Goswami Astikam. Сейчас мы споем Шарга Свами Аштакам. And the reason we're going to sing it is И because причина, по которой мы будем петь Шарга Свами Аштакам, in the spring of 1974, в 1974 году, when devotees were in Vrindavan with Srila Prabhupada, преданные были во Вриндаване со Шрилой Прабхупадой. Hridayananda Das Goswami had been an initiated sannyasi about 2 years. उस समय श्री श्रीमद हृदयानंद दास गोस्वामी Хридаянанда Госвами был гуру, He was leaving Vrindavan. और वो वृंदावन и он уезжал из Вриндавана. He went into Prabhupada's quarters to say goodbye. वो श्रील И он प्रभुपाद пришел к Шриле Прабхупаде, чтобы попрощаться. लेने के लिए गए. So Srila Prabhupada said, श्रील प्रभुपाद ने कहा, Шрила if you Прабхупада learn сказал, this song उन्होंने कहा यदि आप ये если вы выучите эту ज्ञान कर लेते баджан हैं and understand its meaning, और इसका अर्थ и समझ поймете его значение, Vande Rupa Sanatano Raghujado, you will understand the perfection of renunciation. तो वंदे रूप вы सनातन поймете रूप, तो все आप совершенство ये отречения. संन्यास या त्याग की परम सिद्धि समझ लेंगे. I suggest that for those of you who are serious about remaining brahmacharis your whole life or becoming sannyasis, you should sing this every day. तो मेरा आप लोग Я предлагаю всем тем, кто хочет остаться на всю жизнь брамачари или стать саньяси, выучить эту песню, तो आप петь ее каждый день. रोज कीर्तन करिए And recite the translation. और फिर उसके बाद हम И выучить So перевод. the way we're going to do this is I'm going to sing all 4 lines of each verse. तो हम Делать мы будем следующим образом. Я пою все 4 строчки каждого And куплета. then you repeat the 4th line. और फिर Вы आप повторяете только 4-ю строчку. पुनरावृत्ति करिएगा. Only the 4th line. चौथी लाइन को आपको पुनरावृत्ति करनी है.
I don't wish to pass Paramahansa, Father Jackacharyas, for the Sati Shima, is divine grace. They see Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki, not the Koti Vaishnava Dikta. This got deeply founder Acharya Srila Prabhupada ki. Brahmachari Shivarada Thakur ki. Prem se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Bhakti Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda ki. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamukunda Radha Kunda Giri Goparam ki. Vrindavanam ki jai, Mayapurdam ki jai, Gangamai ki jai, Jamunmari ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Mayapur ki jai, ISKCON Uddzайн ki jai,
Sankirtan Yajna Gita, six Goswamis Gita, Samaveta Bhakta Vinda Gita, Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gaura. All glories to Sri Prabhupada. All Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Vishnu Padaya. Stays first. I noticed that some of you, when you're paying obeisances, you don't go into Panch Pranam. मैंने आप लोग को देखा कि आप लोग जब प्रणाम करते हैं तो आप लोग पंचांग प्रणाम नहीं करते हैं। Apparently, it's too much of an effort for you. ऐसा लगता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत Я заметил, что некоторые из вас приносят поклоны не полностью. Точно касаясь пола. Это не очень хорошо. ना ऐसे ही बात ही मार के बैठे रहते हैं और झुक जाते हैं। In one sense, it's not very important. Ну, с какой точки зрения, это, конечно, не важно. The detail. Это деталь всего лишь. If you want to be a brahmachari, you can't be lazy. Но если вы хотите быть брамачарями, вы не можете быть It takes so much effort. Вы не можете быть лентяями. तो पंचांग प्रणाम Потому что करेंगे не так много ресурсов занимает, чтобы Everybody understand? учиться панчапранам. Понятно? Okay, now I'm going to read the translation in English. Я прочитаю перевод на And you английском, can read in Hindi, okay? вы читаете на хинди. So it's up here? No, but it's not in Hindi. Huh? You can do it, okay? Better to read it. Now, somebody might say, well, you know, why is it necessary to, you know, did we just saying it, now we read it in two languages? Seems like too much. Кому-то кажется, что перевод на два языка это слишком. दो भाषा में क्यों पढ़े? But for those of you who understand both English and Hindi, it's no problem. Но для тех, кто понимает Because и Srila Prabhupada said английский и хинди, это in не the проблема. purport in the Bhagavad Gita, В комментарии that repetition of something is necessary for clear understanding. किसी भी चीज की पुनरावृत्ति Прабхупада उसको говорит. अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है। So even if we hear it many, many times in various languages, still fine. तो अगर हम एक ही चीज को कई बार Даже если мы много раз услышим это на разных языках, I это offer my respectful obeisances unto the six Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are always engaged in chanting the holy name of Krishna and dancing. They are just like the ocean of love of God, and they are popular both with the gentle and with the ruffians, because they are not envious of anyone. Whatever they do, they are all pleasing to everyone, and they are fully blessed by Lord Chaitanya. Thus they are engaged in missionary activities meant to deliver all the conditioned souls in the material universe. в глубоком почтении я склоняюсь перед шестью Госвами: Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые танцуют в экстазе, поглощенные пением святых имен Кришны. Они — океан любви к Богу, и поскольку они никому не питают вражды, они пользуются любовью и негодяев, и честных людей. На них лежит благословение Господа читания. И что бы они ни делали, каждому они приносят радость. Они целиком посвятили себя миссионерской деятельности, цель которой — спасти все обусловленные души материальной. Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus they are honored all over the three worlds, and they are worth taking shelter of because they're absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha Krishna. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые тщательно изучили богооткровенные писания
желая ради блага всего человечества установить вечный религиозный принцип. Почитаемые в 3 мирах, они истинное прибежище для всех живых существ, поскольку охвачены чувством утопии и поглощены трансцендентным любовным служением And for my Радхи. respectful obeisances under the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who are very much enriched in understanding of Lord Chaitanya, and who are thus expert in narrating his transcendental qualities. They can purify all conditioned souls from the reactions of their sinful activities by pouring upon them transcendental songs about Govinda. As such, they are very expert in increasing the limits of the ocean of transcendental bliss, and they are the saviors of the living entities from the devouring mouth of liberation. Глубокое почтение я склоняюсь перед 6 Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасой Госвами, Шри Дживы Госвами, Шри Гопалы Бхаттой Госвами, которые глубоко постигли Господа Чайтанью и потому замечательно описывают его трансцендентные качества. Они способны очистить все обусловленные души от последствий их греховной деятельности, пролив на них дождь трансцендентных песней проповедей. Они вызволяют живых существ из всепожирающей пасти Now, for my освобождения respectful и обладают obeisances under the искусством 6 углублять Goswamis, океан namely Sri трансцендентного Rupa богатства. Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who kicked off all association of aristocracy as insignificant. In order to deliver the poor conditioned souls, they accepted loincloths, treating themselves as mendicants. But they are always merged in the ecstatic ocean of the gopis' love for Krishna and bathe always and repeatedly in the waves of that ocean. В глубоком почтении я склоняюсь перед 6 Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые отвергли любое общение со знатью, считая его бессмысленным. Чтобы спасти несчастно обусловленные души, они отреклись от всего, оставив себе лишь набедренный повязок. Однако, хотя они и ведут образ жизни нищих, они всегда погружены в океан экстатической любви к Кришне и постоянно Now, for my купаются в его respectful obeisances under the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopal Bhatta Goswami, who were always engaged in worshipping Radha Krishna in the transcendental land of Vrindavan, where there are beautiful trees full of fruits and flowers, which have under their roots all valuable jewels. Goswamis are perfectly competent to bestow upon the living entities the greatest boon of the goal of life. В глубоком почтении я склоняюсь перед 6 Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой, которые были поглощены поклонением Радхи Кришне на трансцендентной земле Вриндавана, где растет великое множество прекрасных деревьев, усыпанных цветами и отягощенных плодами, и где недра под корнями тех деревьев хранят в себе драгоценные камни. И эти 6 Госвами способны даровать живым существам величайшее благо, ибо могут указать им цель жизни. Так, а только у меня картинка зависла или у всех тоже? Да, зависла картинка. Надеемся, сейчас восстановится интернет. Sometimes on the bank of the Radhakunda Lake or the shores of the Jamuna, and sometimes in Panchiva. There they appeared just like madmen in the full ecstasy of love for Krishna, exhibiting different transcendental symptoms in their bodies, and they were merged in the ecstasy of Krishna consciousness. В глубоком почтении я склоняюсь перед 6 Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами,
Шри Шивы Госвами, Шри Гопалы Бхатты Госвами, которые порой появлялись на берегу Рада Кунды или Ямуны, а порой приходили в Амшивату. Охваченные экстазом сознания Кришны и любви к Кришне, они выглядели как безумцы, и в их телах проявлялись различные признаки трансцендентного экстаза. Shri Rupa Goswami, Shri Sanat Goswami, Shri Bhagavatam Goswami, Shri Bhagavatam Das Goswami, Shri Jiva Goswami, and Shri Gopal Bhatta Goswami, who were chanting very loudly everywhere in Vrindavan, shouting, Queen of Vrindavan, Radharani, Lalita, O Sadananda Maharaj, where are you all now? Are you just on the hill of Govardhan, or are you under the trees on the bank of the Jamuna? Where are you? These were their moods in executing Krishna consciousness. В глубоком почтении я склоняюсь перед 6 Госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Санатной Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые, ходя по Вриндавану, громко вызывали: «О Радхарани, царица Вриндавана! О Лалита! О сын Нанды Махараджа! Где вы теперь? Быть может, гуляете сейчас по холму Говардхан, а может, отдыхаете под сенью деревьев Махадьюти? Где же вы? В таком состоянии духа служили они Кришне». They could probably speak for the next couple of hours just on these verses. Ну, на самом деле мы собираемся следующие 2 часа говорить об этих стихах. Здесь там самый нектар, здесь очень важное наставление. I'll just mention a few. Ну, особенно мы разберем несколько. That in the first verse, it's mentioned that they're near Matsuro, that they're not envious of anyone. В первом стихе говорится, что они не испытывают зависти, и они If you try to please everyone, you'll fail. вот если вы попытаетесь удовлетворить всех, понравиться всем, у вас ничего не получится. Невозможно. But if you become non-envious, everybody will be happy with you. Но вот если вы перестанете завидовать всем, то вы многих... Studying the scriptures scrutinizingly. Во втором стихе они говорят, что они изучили тщательно Богооткровенное Писание. It's not just about reading the books. Это значит, что они не просто читали книги. Scrutinizingly studying, getting into deeply. Они очень глубоко погружались, очень тщательно изучали. And the Sankhya Swamis were spreading Krishna consciousness. И 6 Госвами распространяли сознание Кришны. Also, Sankhya Purvaka Namagana Nadapi, they were counting. और वो जो भी नाम गान ये सब कर रहे थे उसको गिनकर संख्या पूर्वक कर रहे थे. Sankhya means counting. संख्या का अर्थ है गिनना. Just like Srila Prabhupada has given us 16 rounds to chant, that's minimum. तो जिस तरह से श्रील प्रभुपाद हम Шрила Прабхупада дал нам 16 кругов, но это минимум. Counting is very important. इस तरह से Считать очень важно. What else? Что еще? Yeah. Verse number 6. छठा श्लोक. В том стихе. Nidrahara viharakada vichito chatyantatiho to Radha Krishna Ganas Vidira Bhagwan Madhura Mandena Samohito means that how to conquer eating and sleeping. It's a big problem for materially conditioned soul. Обусловленный материально душе очень трудно. To just sleep as much as necessary, just eat as much as necessary.
यहाँ तक कि उपयुक्त То मात्रा есть में सोना спать और столько, сколько खाना необходимо, есть столько, сколько Krishna необходимо. describes in verse 16 in the 6th chapter of Bhagavad Gita. जो कि भगवान श्री कृष्ण То есть в 16 стихе 6 главы Бхагавад-гиты But описывает. it can't be done artificially. Это невозможно искусственно ऐसे сделать. ही व्यावसायिक रूप पर नहीं किया जा सकता Oh, this thing. आवाज Is आ रहा this है। working? But it was automatic for them, it was easy for them, because Radha Krishna Gunasmitara Bhagavan, they were always absorbed in thinking of the loving pastimes of Radha and Krishna. And therefore, it was easy to control their eating and sleeping. लेकिन ये उनके लिए स्वतः Но для 6 Госвами это было сделать легко, потому что они постоянно были погружены в мысли Радхи о Кришне. То есть для них это происходило естественным образом. Maybe we need no batteries or something. Okay. So many incidents I can remember of devotees who were artificially trying to control their eating and sleeping. कई सारी घटनाएं मुझको याद आ रही हैं Я जिसमें भक्तों припоминаю को несколько कृत्रिम случаев, когда преданные пытались रूप से पाने искусственно का प्रयास किया ограничить себя в сне и в питании. It doesn't work. लेकिन ये काम Но नहीं это не करता работает. This is the way to do it. Radha Krishna Gunasmitara Bhagavan. लेकिन इसके करने का तरीका है राधा То есть कृष्ण вот здесь गुना даются संकीर्तन рекомендации, है। как это сделать естественным образом. Okay, and they weren't thinking that they were very advanced devotees, और वो अपने И को они बहुत не ही считали उन्नत себя भक्त नहीं продвинутыми समझते थे преданными. but they were thinking, where is Krishna? Where is Radha? तो सोच रहे थे Все, कि о कृष्ण чем они कहाँ है думали, राधा это где कहाँ है Кришна, где So they Радхарани. were seeing Radha and Krishna at every moment, but their mood was a mood of separation. वैसे वो राधा और कृष्ण का प्रतिक्षण Ну, दर्शन на कर самом रहे थे деле लेकिन они उनमें везде и во विरह всем всегда वेदना видели का Радху. भाव था Но Another thing их is, настроение было Prabhupada настроение разлуки. the song speaks here about, दूसरी बात जिसका वर्णन इस गीत में हुआ है yeah, second verse, that they're absorbed in the mood of the gopis. कि वो सदैव गोपियों के भाव में Во втором стихе они विभोर रहते थे So Srila Prabhupada said, были охвачены when you чувствами go out гопи. on Sankirtan, when you go out to distribute books, he said, that's the mood of the gopis. Шрила Прабхупада говорил, когда вы выходите на Санкиртну распространять книги, это означает, что вы находитесь в настроении гопи. But that doesn't mean you're a gopi. Но это не значит, что вы сами гопи. It just means the mood of the gopis was not to get close to Krishna and to have Krishna for themselves. It was always to get others close to Krishna. И настроение гопи не в том, чтобы самим приблизиться к Кришне, а других приблизить к Кришне, дать That's where the возможность real другим. nectar is. और वहीं पे Вот в वास्तव में этом अमृत है есть нектар, чтобы других приблизить к Кришне. Chanting japa is also nectar. तो हरि नाम का जप वो भी अमृत है It's also necessary, और आवश्यक भी है Харинама тоже необходимо. but if you want to get the biggest nectar, go on Sankirtan. लेकिन आपको सबसे अधिक यदि रस चाहिए Но तो если इसके लिए вы आपको хотите संकीर्तन में जाना I получать heard that once a самый devotee высший нектар, told Srila распространяйте. Prabhupada that Srila Prabhupada, sometimes please turn off your mobile phones, everybody. Пожалуйста, выключите तो श्री телефон. प्रभुपाद से एक भक्त ने एक बार कहा और आप सभी लोग अपना मोबाइल बंद कर दीजिए This devotee said to Srila Prabhupada that, Prabhupada, when we go out to preach, sometimes we accidentally misrepresent the philosophy. तो एक भक्त ने कहा श्री प्रभुपाद जब प्रचार Шрила किए जाने Прабхупада, तो कभी иногда कभी так получается, что अचानक से во время दुर्घटनावश проповеди हम अपने दर्शन को мы सही से немножко प्रस्तुत नहीं कर неуклюже Or sometimes we представляем accidentally просто. offend somebody. या फिर कभी И कभी иногда мы दुर्भाग्यवश किसी के случайно प्रति кого-то अपराध कर देते оскорбляем. हैं Therefore, sometimes we're reluctant to go out and preach. कभी कभी तो हम खुद झिझकते हैं प्रचार करने के लिए जाने को And Srila Prabhupada responded, श्री प्रभुपाद ने अपनी Прабхупада प्रतिक्रिया दी ответил, so и что? फिर you stay home and cry. फिर आप घर में Ну, बैठ के रो тогда идите дома и плачьте. Means that's where the nectar is. इसका मतलब यहाँ Вот в Going чем on Sankirtan. самый настоящий нектар. इसका मतलब कि Выходить и कृष्ण भावना распространять का сознание वितरण Кришны. करने में ही रस है
Now, in the beginning, I said, I cited Srila Prabhupada's statement that the prayers of the six Goswamis is the perfection of renunciation. Understanding it is the perfection of renunciation. तो प्रारंभ में ही मैं श्रील प्रभुपाद का И उद्धरण किया था вначале я कि упомянул о सत том, गोस्वामी что अष्टकम вот ही этот ваша वैराग्य की саньясника पराकाष्ठा है। But we also это have to understand what renunciation really is. हमको ये भी समझना चाहिए कि हाँ। वैराग्य वास्तव में है то, क्या। как можно If you're понять brahmachari, that doesn't настоящее make you учение. renounce necessarily. तो अगर आप ब्रह्मचारी इसका मतलब ये नहीं Брахмачари क्या не वैराग्य। означает, что обязательно нужно от всего отрекаться. It doesn't make you advanced. ब्रह्मचारी होने का ये मतलब Не है कि आप обязательно बढ़ोतरी है। сделать вас продвинутым. Similarly, sannyas ashram is not a sign of spiritual advancement. जैसे आप संन्यास Это आश्रम то में же самое, если इस बात का вы प्रमाण станете है कि आप саньяси, это बहुत вовсе не उन्नत हैं। гарантирует вам, что вы There may станете be духовно продвинутым. householders who are more spiritually advanced than some sannyasis. तो ऐसा भी हो Некоторые सकता है कि домохозяйства गृहस्थ гораздо कुछ более духовно सन्यासियों से ज्यादा продвинутые, чем उन्नत है। некоторые саньяси. Actually, there are. ऐसा है भी। Так и есть на самом деле. Ashram is not the issue. Ashram is not important. तो आश्रम बहुत Ашрам не ज्यादा так важен. महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। Ашрам это не решение But this проблем. mood of renunciation, this is very important. ये जो Но वैराग्य вот का дух भाव है отречения, वह बहुत ही это очень महत्वपूर्ण важно. है। Настроение отречения. And just a minute. And you can be renounced in any ashram. और आप किसी भी Вы आश्रम में можете быть वैराग्य отреченным в любом हो ашраме. सकते हैं। And some people have an easier time being materially detached in one ashram, but more difficult time in another ashram. कुछ लोग की जिंदगी Но ऐसी вот у होती है कि वो некоторых किसी преданных так आश्रम में получается, बहुत что ही они в ज्यादा одном भौतिक रूप से ашраме अनासक्त रहते हैं कि легко दूसरे от आश्रम में чего-то उनको समस्या отрекаются, आती है। а придя I в can другой ашрам им think делать of это two of сложнее. my godbrothers. I'm sure there are more, but I know of two in particular. ऐसे कुछ उदाहरण Вот हैं я मेरे पास знаю जिनमें से मैं अपने दो конкретно गुरु भाइयों के два बारे में चर्चा примера करना моих They were духовных both братьев. leaders in our society in the 60s and 70s. वे Они были 1960 лидерами के दशक में в нашем काफी движении в जाने-माने 60-х, नेता थे 70-х. इस्कॉन में। One of them had a beautiful family, एक У का одного из बहुत ही них была सुंदर परिवार прекрасная था, семья, beautiful wife, and прекрасная three жена, beautiful children. बहुत ही अच्छी дети पत्नी और 3 замечательные. प्यारे-प्यारे बच्चे। And he was highly respected all over the society. और पूरे И его समाज ценили, में उनका уважали. बहुत सम्मान था। And shortly after Srila Prabhupada left the planet, this devotee, this Grihastha, took sannyas. तो जैसे ही И вот сразу प्रभुपाद вскоре प्रकट после हुए, того, как इस गृहस्थ भक्त ने Шрила सन्यास Прабхупада ले оставил लिया। планету, Within и a этот few преданный years, принял he саньясу. completely fallen down with another woman or some other women and left Krishna consciousness. लेकिन कुछ ही सालों И बाद через 2 उन्हें года अपना आश्रम он छोड़ना पड़ा, किसी совершенно और स्त्री के संग में упал पड़ गए और полностью. Он इस्कॉन связался с से चले какой-то गए। женщиной, It's really и в sad. конечном итоге तो через 2 काफी года दुखद он है। He was ушел doing из fine ИСККОН. as a Очень householder, печально. तो Он गृहस्थी был रूप में अच्छे थे, замечательным грехаском, домохозяином. but then sannyas was obviously not the ashram for him. तो Но очевидно सन्यास было, что आश्रम उनके लिए саньяса ठीक это नहीं था। не для него Another ашрам. godbrothers, similar thing. एक दूसरे गुरु भाई उनके साथ भी सेम वही चीज। So therefore, the real thing is the degree to which one is renounced तो महत्वपूर्ण Поэтому चीज है कि имеет किस значение हद степень तक आप विरक्त нашего हैं or отречения. detached. या फिर अनासक्त हैं। Насколько мы отречены. Yeah, in Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Leela, chapter 6, text 220. चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 6 श्लोक संख्या Читание 220। Чаритамрити отделило There's 6 this statement. वहां पर कथन है, есть You have it there? утверждение. Antya Leela, chapter 6, text 220. it's there. Oh, You will write the okay. time entry. Yeah, but that's Bengali. We need Hindi. Going the wrong way. Go down. You can continue with this one. He will read it. I found it. Huh? I found it. Found it. Found it? Okay.
Yeah, this is a beautiful verse. Mahaprabhur Bhakta Ganar Vaivagya Pradhan Jaha Dehi Pritan Gaur Bhagavan. Renunciation is the basic principle sustaining the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Seeing this renunciation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is extremely satisfied. जो वैराग्य एवं श्री चैतन्य Отречение от महाप्रभु के мира – भक्तों के это जीवन का основополагающий सिद्धांत принцип, है। на श्री котором चैतन्य держится महाप्रभु жизнь जो कि मूल последователей Шри पुरुषोत्तम Чайтаньи भगवान ऐसे Махапрабху. वैराग्य को देखकर Верховный अत्यंत Господь संतुष्ट Шри होते हैं। Чайтаньи Махапрабху очень Therefore, доволен, когда renunciation видит, is что for every преданные ashram. свободны от привязанности к इसलिए этому миру. ये जो वैराग्य है सभी आश्रम के भक्तों के लिए है। And then if it's for every ashram, what is the meaning of renunciation? तो यदि ये सभी Что आश्रम वाले означает हैं तो वैराग्य отречение? का वास्तविक अर्थ क्या है? Can anyone tell me? कोई बता सकता है? Кто-нибудь скажет? Yes. Да. Like not having attachment for what is possessing in material things, although he possesses, but utilize for the propagation of Krishna consciousness. Not being attached to whatever he possesses means a kind of yukta vairagya. Whatever you are possessing, use in service of Krishna. Все, чем вы обладаете, вы используете для служения Кришне. प्रभु युक्त वैराग्य की बात करें कि आपके पास जो भी संपत्ति उसे अनासक्त रहना और उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में नियोजित करना. To not see anything with the sense of enjoying. That's it? To see everything in relationship to Krishna, not seeing it that it is for my enjoyment. Yeah. Видеть все Basically не what it для means, it удовлетворения means своих to, собственных чувств, а для удовлетворения Кришны. not to want to enjoy or control independently of Krishna. तो वास्तव में ही Ну अपनी да, किसी भी это वस्तु значит, को что स्वतंत्र мы रूप से не उसका хотим भोग करने या использовать नियंत्रण что-то करने के для भाव से собственного नहीं देखना. наслаждения, Of course, независимо we от hear often about how we should not try to enjoy or control independently of Krishna. और हम अक्सर ऐसा Конечно, सुनते мы हैं часто कि слышим это, कैसे भोग что और नियंत्रण нам не कृष्ण से следует अलग होकर नहीं использовать करना что-то для चाहिए. себя But или think наслаждаться. about this. Но लेकिन подумайте अब над इसके बारे में सोचिए. In chapter 5 of Bhagavad Gita, text 29, भगवद्गीता अध्याय 5 В 29 में 5 главе we have a Бхагавад-гиты, very текст important 29, verse. बहुत ही महत्वपूर्ण очень श्लोक важный है. стих. Bhaktadan yakatapasam sarvaloka maheshwaram suvidam sarvabhutanam yatvalan shantamrichati. That one can be free from all miseries of material life by understanding that Krishna is Bhaktadan yakatapasam. He's the enjoyer of all sacrifices. He's the supreme enjoyer. कि भगवद्गीता Человек может освободиться от страданий в этом материальном мире, если признает, что Кришна – верховный наслаждающийся. Suvidam sarvabhutanam. He is the best friend of everyone. Кришна – лучший друг всех. And if you try to be everybody's friend, then you're not a devotee, you're a politician. И если вы попытаетесь стать другом для всех, вы не преданный, вы политик. On the other hand, we have in Bhagavad Gita, Krishna saying that a Vaishnava is friend to everyone. Но с другой стороны, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что Вайшнав, он друг всех. It's confusing. What are we supposed to do? Вот непонятно, что же нам делать теперь. That's what it means to be everybody's friend, is to give them Krishna, directly or indirectly. Быть другом всех значит давать всем окружающим Кришну, прямо или косвенно. Somehow or other bring other people closer to Krishna. Так или иначе, помочь другим Even if it's приблизиться к just in Кришне. some little way. अगर आप छोटे से तरीके से भी Даже если In the book чуть-чуть вы Perfect поможете Questions, Perfect Answers, Prabhupada says, if they just give I forget how much money he said. I think he used some British expression, 1 farthing or something like that. He said, they get so much benefit. तो श्री प्रभुपाद पूर्ण प्रश्न पूर्ण в उत्तर книге में «Совершенно कहते हैं कि यदि आप конкретно किसी Шрила को Прабхупада говорил, एक они थोड़ी भी получат कृष्ण очень के много, पास ले जाते очень हैं तो большое उनको बहुत благо, ही ज्यादा फायदा होता है даже They get от closer to малейшего Krishna. соприкосновения. क्योंकि वो कृष्ण के निकट आ गए. Or he also said, if they just touch the book, they get so much benefit. वो ये भी कहते थे कि अगर वो पुस्तक Шрила का Прабхупада स्पर्श говорил, даже करने से если они उनको लाभ मिलता прикоснутся है. к He книге, они said, if уже they say получат. something nice about the book,
they get so. Даже если они просто что-то उसको जब हम хорошее कुछ अच्छा скажут по कहें तो भी книге, उनको они लाभ मिलता получат है। благо. These are just examples of how some small thing brings them closer to Krishna. तो ये सब कुछ छोटी Это चीजें हैं, вам несколько примеров, तो как इससे निकल आ могут जाता है। маленькие And вещи that sets them up for приблизить getting человека к even Кришне. closer. तो उस संबंध में और भी निकट लाया जा सकता है। So a person, well, yeah. My observation is that there are more or less two kinds of brahmacharis. मेरा यह Ну अनुभव вот мои наблюдения, ब्रह्मचारी होते हैं। это There are есть два those типа. who want to, how do you say, practice celibacy and practice discipline in Первое, order to become later to become good grihastas. तो कुछ ऐसे Первые это ब्रह्मचारी те, होते हैं जो кто अच्छा ब्रह्मचर्य और अनुशासन इसलिए पालन करते हैं जैसे целибат बाद में соблюдает и дисциплину для That's того, very чтобы потом good. стать хорошим ये грехастом. बहुत अच्छा It's है, very Очень intelligent. хороший. बहुत बुद्धिमान है वो। Мотивация — это очень умно. I see these days there's so many young men. They graduate from high school and then they go immediately to IIT or some other university. Я наблюдаю, что вот в मैं наше देखता время हूँ आजकल कई सारे बच्चे многие जो हाई स्कूल अपना выпускники कंप्लीट करके पूरा университетов करके идут फिर сразу आईआईटी या फिर और работать अच्छे в कॉलेजेस में जाके IT-сферу. पढ़ाई करते हैं। And they get married and have children and die. शादी Потом करते हैं, они बच्चे होते हैं, मर женятся, जाते заводят हैं। детей и умирают. But they miss the nectar of, they miss the experience of being in the Brahmachari ashram and dedicating themselves full time to spreading Krishna consciousness. They miss that. लेकिन वो जो कृष्ण Но, भावना к सожалению, они जो अनुभव करने का упускают जो रस очень है, अमृत है, важный अपने को этап कृष्ण की इच्छा में कुछ समय के लिए पूर्ण करने का посвятить जो अमृत है полностью उसको खो весь свой देते हैं, день नहीं प्राप्त कर पाते। Кришне. I'm in a часть Facebook жизни. group. Everyone in that group is an initiated disciple of Srila Prabhupada. मैंने एक फेसबुक В одной ग्रुप группе बनाया, есть उसमें सभी भक्त हैं, वो ученики, श्रील все प्रभुपाद के शिष्य инициирующие हैं। Шрилу Прабхупады. And sometimes somebody brings up how during our years living in the temple, और how we just felt tortured in so many ways. И некоторые делятся, как времена Шрилы Прабхупады, они жили в храмах и испытывали на себе, ну, как будто пытки. उसमें उस ग्रुप में लोग ये बात बताते हैं कि कैसे उनको उनके शुरुआती दिनों में मंदिर में किस प्रकार से उनको यातनाएं झेलनी पड़ी थी। Some of the stories of what devotees went through in order to please Srila Prabhupada are just almost unbelievable. या फिर कुछ बहुत ही И कष्टमय есть परिस्थितियां некоторые जो истории, उन्होंने सही как श्रील प्रभुपाद को ученики, प्रसन्न करने के через что им I'm sure you've heard some of пришлось these stories. проходить, उनमें से आप कुछ हो чтобы सकता है सुने हो, достать удовольствие. It's true. Those things are true. वो सब सच्चाई है। Это происходило на самом деле. Then later they get married, they get jobs, they live outside. लेकिन फिर जो बाद में Ну, उन्होंने потом शादी किया, они बाहर रहना चालू कर दिए, женились, выходили नौकरी замуж, किए, заводили детей. Now, 40 or 50 years later, they say, but you know what? И That через time I 40-50 spent лет in the temple, in the ashram, on full-time sankirtan. Those are the best years of my life. लेकिन अभी आपको पता है वो И вот 40-50 через साल बाद क्या 40-50 कहते हैं, лет वो спустя कहते они हैं कि говорят, वो вы शुरुआती знаете, दिनों के जो बड़े вот थोड़ा те मुश्किल годы, थे, जब मंदिर में पूरा когда я был हमेशा रहते полностью थे, занят संकीर्तन служением में जाते थे, Кришне в घर храме, में они мне समस्या थी, казались लेकिन वो मेरे пыткой. जीवन के На самом सबसे деле это अच्छे были क्षण थे। лучшие годы моей жизни. And later, you don't get the chance. और А बाद में आपको अवसर ही नहीं मिलता। Потом уже No шанс matter такой не будет. how sincere you are or pure-hearted you are, family life is entangling. इससे फर्क नहीं पड़ता कि И आप कितने неважно, насколько вы निष्ठावान हैं, ये искренни, परिवार насколько का вы जीवन преданны, ही насколько बंधन вы है। честны. It doesn't matter how you look at it, from what angle, it is complicated. आप इससे फर्क नहीं पड़ता Как, под किस каким углом दृष्टिकोण вы не से देखिए, смотрели на लेकिन यह семейную एक жизнь, जाल की तरह है। она очень Just сложная. read an anecdote Есть of a история. god sister telling about an experience she had with Prabhupada. हमारी एक Моя духовная сестра рассказывала о своем опыте संस्मरण बताया। общения с Шрилой Srila Прабхупадой. Prabhupada was staying at the home of some Indian gentleman, wealthy Indian gentleman in Hyderabad.
हैदराबाद Шрила जब Прабхупада हैदराबाद остановился एक в बहुत ही Гайдарабаде в अमीर одном из भारतीय домов सज्जन के घर одного में हैदराबाद में богатого रुके हुए थे индийца. And he had with him a few dozen disciples. और उनके साथ कुछ दर्जन भर Ну, вместе со Шрилой Прабхупадой были несколько его So учеников. she said she went into this room where Prabhupada was talking to the man's family. और वो माता जी जब उस И कमरे में गई когда तो वो вот моя श्रीमद् духовная प्रभुपाद сестра उस зашла в комнату, Шрила उस आदमी Прабхупада के разговаривал परिवार с वालों से членами बात कर रहे семьи थे этого богатого And she индийца. said Prabhupada was talking to the ladies of the house, in particular the ladies. И प्रभुपाद именно в тот वास्तव момент Шрила मतलब उस Прабхупада समय говорил मुख्यतः с माताओं से बात женщинами, कर रहे थे которые उसमें в его And she доме. said everybody was laughing. और उन्होंने कहा कि И सभी माताएं все हंस रही थी смеялись. So he was telling them that whenever women come into the picture, everything gets complicated. वो कह रहे थे कि जब भी И महिलाओं की все बात смеялись, होती потому है что Шрила तभी चीजें Прабхупада говорил, मुश्किल как हो только जाती हैं женщина And he gave появляется the на сцене, все example становится of очень Lord Ramachandra. трудно. और उन्हें भगवान श्री И он रामचंद्र का उदाहरण привел दिया пример с Господом Because Рамачандрой. Lord Ramachandra was God himself. भगवान Господь खुद Рамачандра — это रामचंद्र сам तो भगवान Господь. ही थे But when Sita came into the picture, then there was so much trouble. जैसी Но вот माता когда на सीता сцене आई появляется वैसी उनकी Сита, जिंदगी में сразу कठिनाइयां столько आई проблем. And he says in a purport in the Bhagavatam about И, Lord Ramachandra's pastimes, और वो श्रीमद् и в भागवतम के комментарии तात्पर्य में भगवान श्री रामचंद्र Бхагаватам की लीला о के बारे में играх बताते Господа हैं Рамачандры, that this is an example of why when a man goes traveling, he shouldn't take his wife with him. и в одном из примеров श्रील Шрила प्रभुपाद बताते हैं Прабхупада कि जब भी пишет, कोई आदमी если यात्रा человек करने के लिए отправляется в जाए तो उसको путешествие, अपने он не साथ अपनी должен брать पत्नी с लेकर собой नहीं жену. जाना चाहिए So however you slice it, Grihastha life is complicated. तो आप किसी भी प्रकार से Как जाने бы вы समझे ни गृहस्थों का посмотрели जीवन बहुत ही с कठिन है какого Our угла lives are already на so это, complicated. семейная жизнь, Our слава, lives are हमारी already so जिंदगी ज्यादा complicated. जटिल हमारा जीवन पहले से ही जटिल है Just taking care of the body is so complicated. सिर्फ शरीर का ही вот ध्यान रखना просто कितनी समस्याएं हैं इसमें заботиться о Now you своем get another собственном body теле, you уже have to как take много. care of. А здесь вам нужно еще о शादी के बाद чем-то теле आप заботиться. दूसरे शरीर का भी ख्याल Правильно. रखना पड़ेगा But some men, they're how do you say? They don't like to have a simple life. कुछ लोग हैं उनको Но सरल некоторым जीवन мужчинам पसंद не नहीं нравится आता простая है жизнь. They like it complicated. चाहते हैं Они कि बहुत нравится, чтобы все समस्याएं было होनी запутано, трудно, चाहिए сложно. The more complicated, the better. जितनी Чем समस्या сложнее, उतना тем अच्छा лучше. जीवन So, fine. Those people can be householders. ठीक है ऐसे लोग गृहस्थ बन Ну, सकते हैं прекрасно, такие мужчины могут стать домохозяинами. And it doesn't matter इस बात से फर्क नहीं पड़ता И не имеет значения. because, as I said before, you can be detached and renounced in whatever ashram. कि आप किसी Вы भी можете आश्रम में быть भी привязанным или अनासक्त और отреченным विरक्त в रह любом सकते ашраме. But if you want a simple life, हैं यदि आप सरल जीवन चाहते Но если हैं вам нужна then it is простая жизнь, Brahmacharya ashram. ब्रह्मचर्य आश्रम для вас Брахмачари ашрам. But if you're going to be a brahmachari, be a real brahmachari. कि आप ब्रह्मचारी Если вы собираетесь आश्रम में стать रहते हैं तो настоящим आप Брахмачари, एकदम पक्का ब्रह्मचारी बनिए In the seventh canto of Srimad Bhagavatam, в was it седьмой seventh песне canto? Just a minute. No, sixth canto. Sixth canto, Шестой Srimad Bhagavatam, chapter Бхагаватам, 1, text первая 13 to глава, 14. श्रीमद् भागवतम 13, 6:1-13 14 текст. 14-15 Yeah, that's it. Yeah. Mhm. In the purport, it's very, these two verses are very important about austerity Эти and renunciation.
ये दोनों Два श्लोक बहुत ही стиха очень महत्वपूर्ण है तपस्या और важны वैराग्य के об बारे में। отречении And in the и аскезе. purport, Prabhupada says, he's talking Комментарий. about brahmacharya, not brahmachari, but brahmacharya. श्रीप्रभु Ну, ब्रह्मचारी Прабхупада के говорит बारे में नहीं, о ब्रह्मचर्य के брамачарье, बारे о में बात कर रहे हैं। брамачари. Brahmachari refers to a particular ashram. कि ब्रह्मचर्य किसी Брамачари — это ब्रह्मचारी किसी ашрам. विशेष आश्रम के लिए होता है। Ashram means a place for spiritual advancement. आश्रम का अर्थ Ашрам — это है कि значит कोई место एक для स्थान जो कि духовного आपकी развития. आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। Every ashram is supposed to be a place for spiritual advancement. हर एक Каждый आश्रम ашрам — это आध्यात्मिक место उन्नति для के लिए एक духовного स्थान होना развития. चाहिए। But brahmacharya means celibacy. ये Но ब्रह्मचर्य का अर्थ брамачарья है означает целибат, соблюдение ब्रह्मचर्य। целибата. Brahmacharya means celibacy. Брамачарья, Celibacy is brahmacharya. And целибат. in every ashram in ISKCON, one should be celibate. और आप किसी भी И на आश्रम самом में деле हैं, в स्वामी каждом तो आपको ашраме ब्रह्मचर्य ही रहना रहेगा। все должны быть Uh, соблюдать целибат. if a young man, you know, I had an experience many years ago when I was speaking to a room full of brahmacharis like this. तो मेरा एक У अनुभव меня था вот कि मैं एक был बार опыт, ऐसी я रूम однажды में जब разговаривал ब्रह्मचारी с कक्षा कर रहा брамачарями, था полный And зал. trying to, how do you say, reinforce or support their effort to be brahmacharis. और उनको मैं उनको И और они सशक्त хотели कर रहा था और поднять ध्यान как दे бы रहा था कि статус, कैसे वो सदैव ब्रह्मचारी ही रहें। брамачари. And they were listening very attentively. बहुत ही И они очень ध्यानपूर्वक внимательно श्रवण कर रहे слушали. थे। But within the next 2 years, they were all married. Но 2 साल बाद वो सब के सब на विवाहित протяжении थे। следующих 2 лет все они... Sometimes people argue that, but you know, if everybody becomes a brahmachari, then, you know, what's going to happen? What kind of society are we going to have? तो Ну, कभी-कभी लोग иногда ऐसा люди बात करते हैं कि спорят, अगर सभी लोग и говорят, ब्रह्मचारी что ну हो а как जाएंगे вот, तो если समाज все का क्या станут होगा? You don't брамачарями, have to worry about как that. же लेकिन आपको इसके жить? बारे में चिंता नहीं करनी। Because no matter how much the scriptures tell us how complicated grihastha life is, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि Но не अध्यात्म думайте, यानी что किसी все आध्यात्मिक कितना भी останутся अध्याय की брамачарями, потому गृहस्थ что बहुत ही как जटिल бы है। люди we can hear внимательно and не hear изучали, and hear and hear and hear. हम उसको बार-बार भले ही как सुनते бы हैं, люди सुनते हैं, внимательно не सुनते हैं, изучали सुनते हैं, шастры, где Still, написано, most что семейная brahmacharis жизнь will become сложна, Muslim. сколько бы они не слышали о трудностях семейной So жизни, anyway, они все равно here's what женятся. Prabhupada says. Well, he's quoting from scripture. Шрила Прабхупада Is real цитирует, brahmacharya or real celibacy. यहाँ पर श्रील что प्रभुपाद такое настоящий वास्तविक брамачари ब्रह्मचर्य के बारे में и बता रहे हैं настоящий शास्त्रों के целибат. आधार पर। These are the 8 aspects. ये 8 पहलू 8 हैं। Hare аспектов. Krishna. These are the 8 aspects of celibacy. ये ब्रह्मचर्य के 8 पहलू हैं। Listen carefully. Внимательно слушайте. Listen carefully. ध्यान से सुनिए। One should not think of women. स्त्रियों के बारे में Брамачари не должен думать о One should женщинах, not speak about sex life. говорить о यौन сексе, जीवन के बारे में बोलना नहीं चाहिए। One should not dally with women. You know what dally is? заигрывать с स्त्रियों के женщинами. साथ क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। One should not look lustfully at women. स्त्रियों Смотреть на них с को вожделением. कामुकता से नहीं देखना चाहिए। How is that possible? Как это возможно कैसे вообще? संभव है? How do you not look lustfully at a woman? ऐसा कैसे Как करें? можно вот без вожделения काम भावना смотреть? से ना देखें। It helps if you just don't look at them. Ну, ऐसा तभी если только संभव вы है यदि не आप будете उनको вообще на них देखें ही смотреть. ना। One should not talk intimately with women. Беседовать с женщиной наедине. आत्मीयतापूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। One should not decide to engage in sexual intercourse. स्त्रियों Желать близости с nими, и уж यौन тем более не संबंध следует बनाने के बारे пытаться में निर्णय नहीं вступить. करना One चाहिए। should not endeavor for sex life. यौन जीवन के लिए प्रयास नहीं Не करना следует пытаться चाहिए вступить в связь с ними. And of course, one should not engage in sex. और यौन संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। Then Prabhupada says, one should not even think of women or look at them, to say nothing of talking with them. И далее Прабхупада говорит, брамачари должен избегать даже мысли о женщинах, не говоря уже о том, чтобы заглядываться на них This is или called беседовать. first-class brahmacharya. इसको कहते हैं कि प्रथम Вот श्रेणी это первоклассный Of брамачари. course, sometimes, I mean, Prabhupada also spoke with women. Но иногда даже Шрила Прабхупада разговаривал с женщинами. For the sake of preaching. प्रचार के लिए। Но это для проповеди. But, yeah, once I heard Prabhupada talking about
I heard this on a lecture recording. एक बार श्री प्रभुपाद बता रहे थे Я ऐसा मैंने слышал एक lecture запись одной recording में лекции, सुना где है. Шрила He Прабхупада was saying about how we should engage all beautiful women in Krishna consciousness. वो कह रहे थे कि где किस Шрила प्रकार से Прабхупада सभी говорил, что सुंदर мы должны स्त्रियों को задействовать всех कृष्ण красивых की सेवा девушек में लगाना в चाहिए. проповеди сознания I thought, Кришны. excuse me. मैं सोचा И कि अरे преданные ये क्या बोल रहे удивились, हैं. чего. So I rewound a little bit to see if I heard that correctly. तो फिर मैं फिर उस Ну, लेक्चर можно को отмотать, чтобы पीछे से जाके убедиться. सुना कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ. And again, he said, we should engage all beautiful women in Krishna consciousness. फिर उन्होंने कहा कि हमें Мы должны समस्त задействовать स्त्रियों को всех कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए. красивых So I девушек thought, well, в сознании Кришны. maybe I should leave that particular service to somebody else. Может быть, конкретно вот это служение я должен кому-то делегировать. फिर मैंने सोचा कि ये जो विशेष सेवा है इसको हमें किसी दूसरे के सिर पे छोड़ देना चाहिए. The thing is that we hear repeatedly in the scriptures and from Prabhupada's lectures तो हम बार-बार शास्त्रों में और श्री प्रभुपाद के प्रवचनों में श्रवण करते हैं that the key, the ticket to refraining from getting entangled with a family कि हमें А, अपने आप को पारिवारिक जीवन से Ключ बचा к कर решению रखना है, проблемы, उसमें как बद्ध नहीं होना है. не in one привязываться. sense it's very simple. तो ये एक С प्रकार से одной बहुत стороны, ही это очень просто. सरल है. Just absorb yourself always in hearing and chanting Krishna's glories. तो इसके लिए Погрузите आपको क्या करना себя है, सिर्फ कृष्ण в के गुणानुवर्णन को बार-बार творение श्रवण कीर्तन करना है. славы Following Всего. the footsteps of the six Goswamis, छह गोस्वामियों का अनुसरण Следуйте करना है, за 6 Госвами, especially in preaching विशेष रूप से प्रचार особенно and in kirtan. कीर्तन में. и в Киртане. No. During a big kirtan, I mean, how many people are thinking about sex? अच्छा, जब कोई Во बहुत время बढ़िया Киртана कीर्तन चल रहा है तो сколько उस समय людей कौन думает यौन о जीवन сексе? के बारे में सोचता है? Probably not very many. शायद Ну, ज्यादा लोग наверное, नहीं не सोचते очень होंगे. много. Absorbed in the kirtan. Потому что они कीर्तन में погружены मस्त в रहते हैं. Now, regarding Sankirtan, here's another point. तो संकीर्तन के बारे में कोई और महत्वपूर्ण Но बिंदु है. вот если rечь вести про Санкиртану, In the past, sometimes Sankirtan Brahmacharis have discovered that the women tend to take the books more easily than the men, and they are more likely to give money. तो पूर्व काल में ऐसा в संकीर्तन прошлом भक्तों का ब्रह्मачари, अनुभव है कि जो स्त्रियां हैं वह ज्यादा санкиртанщики आध्यात्मिक होती है, तो заметили, ज्यादा что जल्दी से पुस्तकें ले женщины लेती हैं और पैसा охотнее जल्दी दे берут देती हैं. книги и охотнее That's дают пожертвования. because there's a subtle sexual relationship going on between the Brahmachari distributor and this lady. ऐसा इसलिए कि Потому सूक्ष्म रूप что से यौन возникает आदान प्रदान такая होते тонкая रहते हैं сексуальная ब्रह्मचारी और связь между स्त्री के брахмачари मध्य में. мужчиной So и женщиной. sometimes some brahmacharis have started, what do you say, like targeting women. तो इसीलिए कुछ ब्रह्मचारी हैं И वो स्त्रियों को ही иногда अपना लक्ष्य брахмачари बनाते हैं, специально выбирают Because женщин. that way they distribute the most books and they get the most Lakshmi. क्योंकि इस प्रकार से ज्यादा Потому что पुस्तकें таким वितरित образом करते они हैं, ज्यादा पैसा распространяли पाते हैं. больше книг Now и this получали young больше man, пожертвований. what do you think he's going to be dreaming about at night? और जरा सोचिए Но вот ऐसा नौजवान если आदमी такое रात को происходит, क्या как вы думаете, सोचेगा, о чем सपना будет думать देखेगा. брахмачари ночью? All day long, he's looking into the eyes of women and joking with them, etc., etc. पूरे दिन भर ये Весь आदमी день он смотрит स्त्रियों के आंखों में женщину в आंखें डाल के глаза, देख रहा है, उनसे हंसी मजाक улыбается कर им, रहा है. шутит с And ними he и так далее. distributed many books उसने कई सारी И он पुस्तकें भी वितरित распространяет कर много दी, and he книг. collected so much Lakshmi. बहुत सारा Он लक्ष्मी भी собрал कमा много लिया пожертвований. And in the temple, he's a big hero. और मंदिर में बहुत बड़ा हीरो भी И बन в गया. храме он But at становится night, he's героем. not dreaming of Krishna's pastimes. लेकिन रात को तो कृष्ण की लीला Но ही नहीं है. ночью, вечером он не думает об играх Радхи и He's Кришны. dreaming about women. उसको वही Он औरत думает о सपनी женщинах. है. And after not very long, he's not going to be distributing books anymore. और कुछ समय И ज्यादा в दिन скором वो времени он पुस्तक уже वितरण नहीं कर перестает पाएगा. And he's быть, not going to be a brahmachari anymore. он वो перестает быть ब्रह्मचारी नहीं брахмачари. रह पाएगा. So it's very important that devotees understand what their limitations are, to be realistic about what their limitations are. तो Очень भक्त важно लोग को преданным बहुत ही понимать वास्तविक रूप से अपनी свой सीमाओं को समझना है. ресурс, на что они способны, And реально how способны. do you say, not to try to go beyond our capacity. Well, we should stretch our capacity, but be careful not to go too far.
हमको अपनी Ну, क्षमता बढ़ाने конечно, का мы प्रयास должны करना चाहिए, свои लेकिन बहुत способности, आगे नहीं возможности निकलने का расширять, प्रयास करना увеличивать, но चाहिए। мы не должны For чересчур instance, заниматься. Например, going to distribute books in a brothel may not be the best idea for a brahmachari. कि किसी शराब खाने के पास जाकर идти распространять книги в किसी бордель – वेश्यालय это के не पास лучшая जाकर идея для पुस्तक брахмачари. वितरण करना एक ब्रह्मचारी के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। Those poor prostitutes, we should give them the mercy. कि अरे इन बेचारी Ну, वेश्याओं вот पर с भी कृपा целью, होनी что चाहिए। там же бедные проститутки, кто же на них милость прольет? Maybe let somebody else do that one. किसी और Ну, के может быть, ऊपर кто-то उनकी другой जिम्मेदारी это छोड़ сделает. दीजिए। Like Jagai and Madhai. जैसे जगाई और Как вот बधाई। Джагай Мадхай. I've heard that according to Bengali history, Prabhupada talks about Jagai and Madhai as dacoits. तो बंगाली इतिहास के बारे में श्रील प्रभुपाद Согласно ऐसा Бенгале, जगाई बधाई को डाकुओं के रूप में Джагай बताते हैं। Мадхай And говорили, что debauchees. डाकू Debauchees. They're very fallen. They were drunk, Vivachis, то есть etc. самые падшие, पियक्कड़। пьяницы. But I've heard that according to Bengali history, Jagai and Madhai were much worse than that. लेकिन बंगाली इतिहास Но के согласно माध्यम бенгальской से हमने истории, सुना вот कि Бенгале, जगाई मदाई Джагай उससे भी Мадхай ज्यादा были घोर гораздо पापी थे। хуже. These guys were На самом деле. gangsters. ये लोग Они были वास्तव реальными में бандитами. एक खतरनाक खूंखार डाकू थे। Their daily activities included raping, arson, murder. वो बलात्कार Их किया करते ежедневной थे, деятельностью हत्या были किया करते грабежи, थे। убийства, насилие. They were mafia type guys. वो माफिया ही थे। Ну, эти парни So были one мафиози. might get inspired by hearing about Lord Nityananda and saving Jagai and Madhai. तो किसी को इससे बहुत ही प्रेरणा मिल सकती है कि И किस तरह можно से नित्यानंद उन्हें вдохновиться जगाई вот मधाई этой को बचाया। историей Yes, that's what I'll do. I'll спасения, go to the mafia. कि о अरे मैं भी अभी спасении चलता हूँ, मैं भी माफिया Джагая के ही पास Мадхая जाऊंगा। и вдохновиться и сказать, я пойду спасать Better мафию. to just, take your ego down a little. अच्छा तो Может быть, ईगो को आपने немножечко हटा के свое थोड़ा कम कर эго दीजिए। Do what you урезать, are able to убавить. do. आप वही करिए जितना आपकी Вы क्षमता уверены, है। что вы сможете это сделать? But for somebody who really wants to be a brahmachari, in what, if somebody really wants to be celibate in whatever ashram, preaching is super important. तो कोई Для тех, кто ब्रह्मचर्य хочет किसी भी आश्रम में соблюдать रहकर целибат, इसका неважно какой ब्रह्मचर्य का ашрам, पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए очень सबसे важна अच्छा проповедь. विकल्प है कि Максимально आप важна प्रचार проповедь. करें। And Проповедь. if you want to get married, you should think very carefully what your reason is. तो И यदि если आप вы विवाह собираетесь करना жениться, चाहते вы हैं तो должны आप पहले очень कारण внимательно सोचिए подумать, कि आप क्यों какова моя विवाह करना истинная चाहते हैं। причина, Sometimes почему я хочу. brahmacharis have a problem with masturbation. कभी कभी ब्रह्मचारी को हस्तमैथुन की समस्या होती है। And then they think the solution is to get married. उनको लगता है समाधान है कि И если विवाह у करना Брахмачари चाहिए। есть सексуальное желание, Really? значит, можно वास्तव में ऐसा жениться. है, That's not going to solve your problem. इससे आपकी समस्या И नहीं это не समाधान решит होगी। вашу проблему. Because in real grihastha life, there's not much sex. क्योंकि А वास्तविक настоящая जीवन में жизнь ज्यादा यौन грехастки – это संबंध не नहीं значит, है। что вы будете I там heard that сексом. one time Srila Prabhupada was talking about this topic in a lecture. This was in the early days. शुरुआती दिनों में श्रील В ранние प्रभुपाद дни एक ИСККОН प्रवचन Шрила में इस Прабхупада в बारे में лекциях बात कर говорил об रहे थे। этом. And so at the end of the lecture, one young man was looking very concerned. तो जब И श्रील в प्रभुपाद का конце प्रवचन खत्म हुआ лекции तो один एक молодой человек काफी был युवा очень भक्त озабочен. उनको काफी चिंता हो रही थी। He said, Swamiji, you said that even in household life, even in married life, there should be no sex. उसने कहा कि स्वामी जी क्या С आप вами ये же вы कहना говорите, चाहते हैं что कि यहाँ तक даже कि в विवाहित семейной जीवन में жизни, भी даже у कोई ऐसे домохозяев не यौन должно быть संबंध नहीं секса. बनने चाहिए Except at the time of month that the wife is fertile. कि सिर्फ उसी За समय जब исключением स्त्री उसके लिए तैयार हो, того, That когда... means maximum once a month. यानी कि Но ज्यादा это से ज्यादा происходит महीने में एक बार। раз в месяц. And then you said that А затем вы after сказали, conception, there should be no more sex until 6 months after the child is born. और फिर आपने ये कहा что कि после एक बार зачатия गर्भधारण हो должно быть जाए और никакого आपको तब तक секса संबंध до नहीं тех पор, होना चाहिए пока जब तक बच्चा जन्म हो ребенок... जाए उसके 6 महीने बाद तक। That's 15 months. इसका मतलब Это 15 महीने же बाद 15 तक। месяцев. So what's the point? Какой вообще смысл? कहा करने का मुद्दा ही क्या है? Prabhupada said, yes, exactly. What's the point? Прабхупад сказал, вот, в этом и смысл. If you think you're going to get sense gratification in household life, you are in dreamland. तो अगर आप Если вы को думаете, लगता है कि что आप вы в विवाह грехах करके ашрам आपको будете इतनी तृप्ति наслаждаться, मिलेगी तो आप вы सपनों की दुनिया में заблуждаетесь. हैं। One of the things that's kept me out of household life is that I saw that the householders have to work really hard.
Одна из вещей, почему я не वो है удержался कि ये गृहस्थों को बहुत ज्यादा перед कड़ी मेहनत расскажем, करनी पड़ती है। нужно было I очень thought I don't like to work very hard. много работать. Я और मुझे подумал, लगता я है कि ऐसी не ज्यादा для меня. कड़ी मेहनत करके कमाना वाला नहीं है। Not worship, it's not worth it for a few moments of pleasure. कुछ क्षणिक सुख Но के लिए इतना कड़ी оно того не मेहनत, стоит ради The там reality is нескольких there's not моментов much sense gratification in удовольствия. household life. क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में ज्यादा तृप्ति नहीं मिल पाती, Mostly it's hard work. ज्यादातर बहुत कठिन मेहनत По होती большей части Брахмачари это тяжелая работа. We should probably end soon, right? है। अभी हम लोग Скоро мы должны уже заканчивать, верно? What's that? Yesterday they were bereft of your association, so they want to compensate it together. So we can speak. They are loving the class and they want that you, if possible. Okay, well, I want to bring up something that was very important to me. Я хочу сказать о нескольких вещах, которые очень важны для Over the меня. years, of course, there's so much nectar in Prabhupada's books that can help us to be aloof from sex desire. श्री प्रभुपाद की पुस्तकों में इतना रस, इतना अमृत है कि हम अपने आप को इस यौन भावनाओं से दूर रख सकते हैं। But there are two verses in particular that I found most valuable for me. लेकिन जो दो श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, Есть मुझको два लगे конкретных हैं। стиха, которые я нахожу очень ценными для себя. These two verses again and again saved me. तो ये जो दोनों श्लोक हैं, Эти इन्होंने два बार-बार стиха मुझे снова и снова спасают меня. Bhagavad Gita chapter 2, Бхагавад-гита 2, 59. भगवद्गीता 59. अध्याय 2 59 श्लोक। Vishayavani vartante adahadashadehinaha rasavarjam asopyasha pradandishvana vartate. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. जब भी देहधारी Даже जीव को воздерживаясь от इंद्रिय भोग чувственных से दूर रखा удовольствий, जाता है, फिर भी उसको воплощенная इंद्रिय в теле विषयों के душа प्रति आसक्ति बनी сохраняет रहती है। вкус к ним, लेकिन जब उसको उत्तम но रस का познав более अनुभव होने लगता है, возвышенный तो वो вкус, अपनी चेतना она में स्थिर утрачивает हो जाता интерес है। к объектам In чувств, one sense, this is the доставляющим essence. наслаждение, и तो утверждается в एक духовном प्रकार से сознании. यही सार है। Вот в этом суть. People go into household life because they think they're going to get pleasure. लोग गृहस्थ जीवन में इसलिए जाते Люди हैं क्योंकि उनको становятся लगता है कि उनको семейными, потому आनंद что они думают, что मिलेगा। это им удовольствие But we принесет. have to have, in order to avoid that trap, we have to get a higher taste of pleasure. It's the only way. लेकिन उस Но फांस को чтобы не बचाने попасть के в эту लिए हमको क्या ловушку, करना है, हमको अपने мы जीवन में должны ज्यादा получить उत्तम रस более का высший. आस्वादन सीखना है। So even though the taste for sense objects remains, but he just doesn't do those things. तो यद्यपि ऐसा हो सकता है कि आपका И इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति вкус बनी रहे, равно लेकिन आप उसको करेंगे नहीं। сохраняется, And чувство then he can удовольствия, be даже fixed если in мы consciousness. तो इस प्रकार не से वह अपनी практикуем. चेतना में दृढ़ स्थिर रह सकता है। Many times I thought, okay, I have sex desire. तो कई बार ऐसा हुआ, Ну, так, मुझे लगा कि कुछ काम भावना है, So чувствовал let me just put сексуальное it желание. off. मुझे लगा चलो इसको ऐसे एक दरकिनार कर देते हैं। It's like a mother with the child wants some cookie or something. तो इस तरह से जैसे बच्चा जो है माँ से कुछ कुकी वगैरह मांगता है, And the mother says, yes, it's okay, but not right now, later. और माँ जो И कहती है बच्चे से हाँ ठीक है मिलेगा, рекомендуется अभी вот थोड़ा так देर вот बाद से। поступать, как мама с ребенком. Put it off, put it off. Если ребенок говорит, мама, я ऐसे хочу еще दरकिनार करिए, किनारे कर दीजिए, сладости. हटा दीजिए Да, да, हमसे। хорошо, но только And позже. eventually you get so old that it's not an issue anymore. और फिर ऐसा И करते करते постепенно बुरी हो जाती вы है कि आप становитесь ज्यादा настолько से старым, परेशान что для вас это Prabhupada больше не says in the проблема. purport, Прабхупад говорит в तात्पर्य комментарии. बताते हैं, unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. जब तक कोई До тех दिव्य пор, रूप, пока человек не तब достигнет तक духовного अपने уровня, आप को он не इंद्रिय भोग сможет से полностью रोक नहीं отказаться от सकता। чувственных удовольствий. Srila Prabhupada told Satsvarup Das Goswami when he was a new sannyasi. श्री प्रभुपाद ने श्री Прабхупад सत्संग говорил, दास что गोस्वामी महाराज से Сасварупадас बताया, जब Госвами, वे когда नए он सन्यासी только-только थे, He стал said, as саньяси, long as you have this body, you will have sex desire. उन्होंने कहा जब तक आपका ये शरीर है, तब तक он आप говорил, में काम до की тех пор, इच्छाएं пока у вас रहेंगी। будет это тело, Continuing with the у вас будет purport, сексуальное желание. तात्पर्य फिर से, the process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables.
तो इंद्रिय Предписание भोग шастр, ограничивающие эти रोकने удовольствия, можно जो сравнить с है диетой, नियम налагающей कानून से वह इसी ограничения на प्रकार से है употребление कि тех или जैसे иных किसी продуктов. बीमार व्यक्ति को किसी विशेष खाद्य पदार्थ खाने से रोका जाए. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. तो जो Однако нельзя сказать, что больному जो нравится बीमार подобное व्यक्ति है поведение, उसको ऐसे или что у него пропадает जो रोक вкус टोके к पसंद भी пищевым नहीं блюдам. आती और ना ही उसका स्वाद जाता है. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga yoga in the matter of yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, etc., is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. इसी प्रकार से इंद्रियों का Подобно संयम этому, कुछ людям, आध्यात्मिक лишенным विधि वысшего जैसे знания, अष्टांग шастры योग предписывают जिसमें ограничивать आते हैं деятельность यम своих नियम чувств आसन с помощью प्राणायाम духовной प्रत्याहार практики, такой धारणा как ध्यान аштанга ये йога, सब कम बुद्धिमान состоящая लोगों из के ямы लिए जिनके ниямы, पास ज्यादा асана, ज्ञान नहीं пранаям, है. But one who pratyahara, has dharana, tasted the dhyana, samadhi. beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. लेकिन जिसने Но भगवान श्री тот, кто, कृष्ण के развивая в себе सूक्ष्म सोзнание Кришны, познал सौंदर्य красоту का его, आस्वादन कर लिया है और वह утрачивает जब उन्मत्त всякий होता интерес जाता है к कृष्ण भावनामृत безжизненным में материальным तब उसका объектам. यह जड़ भौतिक पदार्थों के Okay. प्रति कोई भी रुचि नहीं रह जाती. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement in life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. इस प्रकार से जो ये Таким रोक टोक образом, है предписания कम шастр बुद्धिमान नौसिखिया предназначены लोगों для के не लिए है очень जो कि разумных भक्ति में людей, ज्यादा उन्नति नहीं है. तो стоящих в ऐसी начале रोक टोक духовного तभी пути. तक अच्छा है जब तक किसी को भक्ति में रुचि नहीं मिली है. And the next sentence is especially powerful. और जो अगला वाक्य वो बहुत И ही следующее महत्वपूर्ण है, предложение शक्तिशाली особенно है. When могущественное. one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. कि जब भी कोई वास्तव में Они कृष्ण нужны भावना лишь до भावित हो тех जाता है пор, तो वह пока человек स्वतः не ऐसे почувствует истинный вкус बदरंग сознания बेढंगी Кришны. चीजों के प्रति अपनी For decades, but these two verses, more than anything, any other verses, have practically saved me from getting entangled. तो कई सारे दशकों से Вот मेरा именно ये эти два अनुभव रहा है कि стиха ये जो दोनों больше दो всего श्लोक हैं помогают мне, उन्होंने они больше मुझे всего меня इधर उधर जाने से спасают. बचा के रखा है. So I hope they'll also save you. तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये आपको भी Я बचा के надеюсь, रखेंगे. они тоже вас I got спасут. lost. How can I get to where it was? Oh, okay, here we go. Okay, so, yeah. So text 70, the chapter 2, text 70. भगवद गीता अध्याय Глава 2 2, श्लोक текст संख्या 70. 70. बहुत ही सुंदर श्लोक. Puryamanam achalapatishtam samudramapa pravasanti yadvat davat kamayam pravasanti sarve sasantam abnoti nakamakami. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. एक व्यक्ति जो विचित्र नहीं होता जिसके Тот, अंदर кого не लगातार беспокоит непрерывный धाराओं का поток वही желаний, प्रवाह होता है, подобен ठीक इस तरह से океану, जैसे который никогда नदियां не समुद्र выходит में на प्रवेश берегов, करती हैं, хотя в него फिर впадает भी множество рек. जो Только ऐसी такой человек काम способен भावना से обрести प्रभावित नहीं удовлетворение, होता वही वास्तव में а शांति не प्राप्त тот, कर кто सकता है. और стремится ऐसा व्यक्ति कभी भी удовлетворить शांति свои नहीं प्राप्त желания. कर सकता जो इन इच्छाओं को पूरे करने के प्रयास में लगा रहता है. Incessant flow of desires. That means these desires are going to keep coming. तो धारा प्रवाह Беспрерывный इच्छाएं यानी поток इच्छाएं желаний, то कभी есть это रुकेंगी означает, नहीं, что они आती रहेंगी постоянно आती будут रहेंगी. приходить. Don't expect them to stop very soon. ऐसा Не आप ожидайте, что они в आशा скором नहीं времени रखिए कि आपकी прекратятся. इच्छाएं बंद हो जाएंगी. But the real issue is how do we respond to these flow of desires? तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि Решение आप इन проблемы इच्छाओं заключается के в том, प्रति अपनी как мы प्रतिक्रिया क्या देंगे. One time Srila Prabhupada was воспринимаем, talking about women. तो как мы प्रभुपाद एक реагируем बार на них. स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे. He said, we do not say that they are not beautiful. मैं ऐसा नहीं हम ऐसा नहीं Шрила करें Прабхупада कि как स्त्रियां сказал, वो мы не सुंदर говорим, नहीं, что They are эти beautiful. женщины ये सुंदर है, But we ужасны. don't do Нет, они anything about it. прекрасны. लेकिन हम Но мы с этим इससे ничего не कोई делаем. मतलब नहीं रखते. Another time, I heard Prabhupada talking about how our sense desires are just like for materially conditioned soul. The sense desires are just like raging rivers. Другой раз я слышал, что Шрила Прабхупада сравнивает наши материальные желания, да, наши материальные чувства с горными
You know бушующим what рекам. white water rafting is? आपको पता है कि Вы знаете, ये что такое जो पानी рафтинг जो на ऐसे вот этих स्पोर्टिंग белых राफ्टिंग горных किया जाता है реках? वो क्या होता It's है like in a very wild river, you know, very fast and very turbulent. कि जब नदी बहुत ही Река उफान горная, और она बहुत सारी очень इसमें быстрая, तरंगे आ रही हैं उस समय турбулентная, And when бушующая. you're in these such rivers, you practically have no control. जब आप ऐसी नदी में И आपके когда вы पास находитесь उस в समय कोई такой नियंत्रण реке, у नहीं вас रहेगा You just вообще нет have to возможности hope that your что-либо raft контролировать. doesn't turn over. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी वो И राफ्ट जो है ваш पलटे рафт, नहीं вот эта ваша So лодка, in она в любой момент materially может перевернуться. conditioned life, it feels like that often. That you're just like you have no control. You're just in this wild river that you can't do anything about it. You can't stop it. तो भौतिक पद्धति में ऐसे И ही вот होता है материально कि आपको обусловленная लगता है कि жизнь, आप она किसी сравнивается परिस्थिति с में कुछ такой भी नहीं कर бушующей सकते, आपके рекой. किसी भी То есть вы परिस्थिति ничего не में можете कोई с этим नियंत्रण поделать, नहीं है вы не можете And контролировать эти you чувства, know, они if полностью с вами let's say овладевают. you fall out of your raft, which happens, Ну вот, और मान например, लीजिए कि आप अपनी если так राफ्ट से случилось, गिर что भी вы जाते हैं जो कि अक्सर выпали из होता है вашего you're рафта, doing good if you could just keep your head above the water. तो फिर вы भी тут आप अगर अपना вы सिर जो даже है पानी голову के не ऊपर रखें तो भी сможете तो आप вытащить из सुरक्षित воды. रहेंगे And you try to swim to the shore, but you can't swim to the shore. И और फिर если вы आप пытаетесь समुद्र доплыть до берега, у вас किनारे ничего не तक आने का получается, प्रयास कर सकते हैं लेकिन जो कि आप कर не नहीं сможете. पाएंगे You're totally helpless, तो ऐसी Вы полностью परिस्थिति में आप беспомощны. पूरी तरह से असहाय रहेंगे totally under the control of this wild, raging river. उस समय आप ऐसी तेज Вы भयानक находитесь в उफंती полном नदी के आप контроле बच вот में этой रहेंगे But then бушующей, горной, бешеной eventually реки. the river gets to the ocean, तो लेकिन कुछ И в समय बाद конечном итоге नदी река समुद्र के впадает в पास में ले океан. जाती है and the ocean is bigger than the river. और ये जो समुद्र है И वह океан नदी से बहुत больше, बड़ा чем है река. And especially when the tide is coming in, और विशेष रूप से तब जब ज्वार И आ особенно, रहा है когда when this прилив, river hits the ocean, it's like hitting a brick wall. Just и the river has когда no река power. तो जब ये जो впадает नदी है в ऐसे ज्वार океан, особенно у которого की जो прилив, कि то दीवार की तरह это ऐसे сравнится समय खड़ा как रहता है तो नदी кирпич ударяется о टूट стену, जाती то есть है практически The Prabhupada никакого said that even though воздействия we're не происходит. impelled by these strong desires, प्रभात but कहते हैं यद्यपि हमारे ऊपर ऐसी इच्छाओं का प्रहार Желания हो могут быть очень he said the сильными. Sankirtan movement is like the ocean. लेकिन उन्होंने कहा कि जो И Шрила संकीर्तन Прабхупада आंदोलन говорит, है что यह движение समुद्र की तरह Санкиртана, है оно как океан. You engage yourself in the Sankirtan movement, and these desires become, how do you say, null. They become nothing. तो आप अपने आप को संकीर्तन Вот если вы будете आंदोलन में задействовать नियुक्त себя रखिए और फिर в आपकी जो движение इच्छा है Санкиртана, то यह вот эти शून्य हो ваши जाएगी материальные желания, खत्म हो они जाएगी практически अर्थहीन हो сойдут на जाएगी нет. That's the То есть secret. они не будут तो иметь यह над вами रहस्य власти. है, सूत्र है। Okay, any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes, sir. Да. Speak in Hindi. Говорите на хинди. देखते हैं कि जो 8 एस्पेक्ट्स हैं ब्रह्मचर्य के उसमें ग्रेविटी पहले एस्पेक्ट के और 8वां एस्पेक्ट के तो बहुत ही जमीन आसमान का असर है मतलब तो लाइक फर्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो एंड एनीवे वी डू नॉट एंगेज so why is it so late? As there are 8 aspects of sex life, What's that? there are 8 aspects of brahmacharya. So there is a wide range of difference between first and 8th. What's that? There is wide range of difference between first aspect and 8th aspect. Yeah. First we cannot avoid and 8th anyway we don't do. So what should we do? Есть 8 аспектов в жизни How to Брахмачари. understand these aspects? I don't understand what he means. I don't understand the question. The question is that there are 8 Вопрос aspects of brahmacharya. Yeah, First we Есть cannot 8 follow. 8th we even don't think of. yeah. So So you do the best you can. И вопрос такой, если мы не можем всем им следовать, ответ, तो आप जो भी делайте करना है, все, что в ваших силах. And you pray to Krishna, Lord Chaitanya, Prabhupada. Лучшее, что можете делать, делайте. И молитесь Кришне, Господу Чайтанье, And when you Шри can do better, you do better. И когда вы сможете что-то улучшить, улучшайте. Nobody becomes a pro football player overnight. Or let's say India, okay, pro cricket player. Никто не становится чемпионом по крикету в одну ночь. Which may be the stupidest game I ever saw in my life. Крикет – это одна из самых глупейших игр, которые я в своей жизни видел. But anyway,
It doesn't happen overnight. खैर Но в फिर любом भी कोई случае, за одну रातों रात ночь вы ऐसा не महान станете क्रिकेटर नहीं чемпионом होता These है। guys той или who are иной игры. big cricket heroes, probably most of them started playing when they were like 5 or 6 years old. जो अभी बड़े बड़े क्रिकेट के Вот एти हीरो हैं वो самые 5-6 великие साल игроки से в ही क्रिकेट крикет, खेलना они चालू करते हैं। начинали So, играть, когда они были what you мальчиками. need to do is you need to practice Bhairi Sadhana Bhakti. तो आपको क्या करना है, Все, आपको что वही вам нужно साधना делать, это практиковать вайди Sadhana садхану. means practice. साधना का Садхана значит अर्थ है практика. अभ्यास। So as you practice, you get better at it. तो И जितना ही आप с अभ्यास практикой करेंगे उतना ही आप вы становитесь лучше. प्रगति करते जाएंगे। We should read things like this that we just read about the 8 aspects of celibacy. And we should understand, okay, this is the goal. This is what I need to do. तो हमको अभी हमने जो भी पढ़ा है Вот мы पहले прочитали ब्रह्मचर्य эти के, 8 इसको अभी аспектов चीजें Брахмачари. पढ़नी चाहिए जिससे Мы हमें должны अपने понять, लक्ष्य это के цель, बारे में पता к रहे ней हमको мне ये нужно सब करना идти. है। One big mistake is to become disrespectful to women. तो एक बड़ी Одна из गलती больших जो हम ошибок करते हैं – वो है कि это स्त्रियों को не सम्मान уважать женщин. Women are перед not the этим. problem. स्त्रियां समस्या नहीं, The Проблема не в mind is женщине, the problem. आपका मन проблема в уме. समस्या का कारण है। So we practice controlling the mind and practice trying to follow these 8 aspects of celibacy. तो अपने मन को Мы नियंत्रित करने का प्रयास практикуемся करिए और ये जो 8 контролировать свой ब्रह्मचर्य ум, के мы पहले इनको практикуемся समझने следовать का этим पालन 8 करने का аспектам प्रयास Брахмачари. करिए। Because the problem is, you see that the first aspects are more subtle aspects. क्योंकि आप देखेंगे जो शुरुआती Первый аспект, он And they тоньше, lead to the 8th aspect, which is gross sex. और जो 8वां है но वह он приводит बहुत ही к ज्यादा स्थूल है। So if другим you don't control аспектам. the first subtle aspects, ultimately that's what it will lead to. तो अगर आप И पहले 7 если вы को не नियंत्रण नहीं контролируете करेंगे तो первый 8 में тонкий аспект, то It's он like when your автоматически body has a приведет. cold. जैसे मान लीजिए आपको सर्दी Ну, हो गई например, है, вот тело, You should take care of it because it can become something more serious, like pneumonia. तो आपको शुरुआती दिनों में थोड़ा если ध्यान тело रखना चाहिए कि बाद में вы निमोनिया का। переохладили, Or то as нужно, described in the Chaitanya Charitamrita and other places. तो जैसे कि चैतन्य चरित्र то में тело दूसरी нужно जगह है, лечить, не запускать его, потому что это It's приведет like к другим проблемам, если вы вовремя не вылечите. we're watering the devotional creeper in our heart with the hearing process of hearing and chanting. कि हम श्रवण और कीर्तन के Процесс माध्यम से воспевания и повторения भक्ति святых में लता имен, को पोषण दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। But while we're watering, weeds are also growing up. लेकिन जैसे ही ये पानी दे रहे हैं таким उसमें образом мы खरपतवार भी поливаем, जम да, So наш you сад. need to regularly pull the weeds. तो इसलिए आपको प्रतिदिन Но также нам нужно регулярно You have to выпалывать be сорняки, ruthless. तो इसलिए आपको बहुत ही корни выдирать сорняки. Show no mercy. कोई कृपा नहीं दिखानी। See a weed, Безжалостно. take it away. Как только увидели сорняк, тут же вырвали с корнями его. Okay? Хорошо? Yes. Sir. Да. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर गोस्वामी अष्टकम से बताया, चैतन्य चरितामृत से बहुत अच्छे पॉइंट बताए, श्रील प्रभुपाद पास्ट टाइम से बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और फिर लास्ट में भगवद गीता से बहुत ही हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे। मेरा प्रश्न महाराज है कि आप जैसे अपनी सेवाओं के अलावा क्या ऐसा चीज हम लोग मतलब हमारे शेड्यूल में ऐसे रख सकते हैं जो हमें और ज्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। और महाराज आपसे भी सुनना चाहेंगे कि मतलब आप अपने शेड्यूल में मतलब कुछ ऐसी चीजें किस प्रकार से रखते हैं कि जो आपको और इस प्रकार से और मतलब फील होता है कि और एब्जॉर्ब करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। Hare Krishna Maharaj, thank you for delivering this lecture by quoting many verses from Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, pastimes of Srila Prabhupada. Maharaj, my question is that like there are some services that we do which are prescribed to us by our authorities. Apart from those services, Wait, what? we do services. Sure. Services that are prescribed to us by our authorities. Yeah. Apart from that, what else we should put in our schedule so that we can be more absorbed in Krishna consciousness? Что еще мы можем делать, кроме Apart from my наших services, what обязанностей, для more того, чтобы extra should I продвигаться include в in my сознании? schedule so that I can be more absorbed in Krishna consciousness? And also, what Maharaj, can you please share that what activities you include in your schedule so that you are always in Krishna consciousness?
It Что вы можете depends посоветовать из своей always практики? on time, place, circumstance, and individual. दुनिया Все सदैव зависит от तेज места, времени, बात обстоятельств и और उस личности. व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है. I just gave you one thing you can do, and that's sing this prayers to the six Goswamis every day. Вот одну практическую вещь я вам дал, как вы можете еще больше погрузиться в сознание Кришны, это читайте каждый день Шадга Prabhupada said Самаштхи. everything is based on desire. Прабхупад говорил, все основано на We need to желании. cultivate that desire in our hearts. तो ऐसी इच्छा हमको अपने Мы मन में должны रखनी развивать вот это So желание в one way to сердце. do that is every day when you wake up, तो एक चीज И आपको करनी один होगी из जब आप सुबह उठें примеров это think каждый three раз, things. आप दो चीजों каждый को день, रखें когда вы просыпаетесь утром, How to делайте две вещи. increase the quantity of my service कि हम अपनी Думайте над सेवा को тем, कैसे और как ज्यादा से мне ज्यादा сегодня बढ़ाना है. увеличить, and how to improve the quality of my service. और अपनी как мне सेवा сегодня की увеличить गुणवत्ता को भी कैसे служение बढ़ाना है. при Прабхупаде, как мне улучшить качество моего служения. यदि यह आपका ध्यान है You'll be okay. आप ठीक बने रहेंगे. Если вы каждый день будете каждое утро об этом думать, то с вами будет все в порядке. Okay, one more question. Yes. Еще один вопрос. हरे कृष्णा महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचारी क्लास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो मैंने अभी तक सुनी महाराज जी जैसे युक्त वैराग्य का जो प्रिंसिपल है वो जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत साल बार युक्त और मैं आपको पाता हूँ और बहुत सारे भक्तों को भी पाता हूँ कि हम युक्त ही रह जाते हैं वैराग्य के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कैसे कितनी सावधानियां रखनी चाहिए हम लोग को और कैसे हम इस सिद्धांत का सही पालन कर पाए कृष्ण भगवान. Krishna Maharaj, question is that whenever we talk of this principle of Yukta Vairagya, so at that time we cannot maintain Vairagya, but we remain. Wait, slow down. What? When we talk of Yukta Vairagya, then we are not able to practice Vairagya. We become sense objects. Instead of Yukta Vairagya, things become more. So instead of Yukta Vairagya, things become more complex. Yukta. People become attached, yeah, Instead of doing Yukta Vairagya, people come in touch with sense objects and they just get attached to them. Yeah. So it depends on the individual. यह भी व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है. Вопрос был про юкта вайрагию. You can say your digestive capacity is. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपनी पाचन शक्ति समझना है. Srila Prabhupada said, if one is very advanced, he can engage anything in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что человек может стать очень продвинутым, если он все действует в служении. The implication is that if you're not very advanced, you may not be able to engage everything in Krishna consciousness. Поэтому, если вы не очень продвинутый, то вы не сможете все задействовать. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Accept everything favorable. Принимайте все приятное для преданного служения и отвергайте все неблагоприятное. Okay, we're going to stop here. На этом остановимся.